why we basically work more on projection of point, because we need to have good understanding regarding the projections which had been introduced, क्योंकि इन्हीं projections से हम लोग सीखेंगे कि sketch को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, टेक्निकल ड्राइंग्स को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा. So it is most important for an engineer to learn this particular aspect in clear manner. So let us move ahead. Today is lecture number 4. I am Dr. Kaushal Bhavsar, who is presenting this session on projection of point line. Let us move ahead. We have previously discussed this stuff. Point A को अगर present करना है तो top view में या फिर उसका जो भी horizontal plane पे projection हमें मिलता है उसमें हम small alphabet A से indicate करेंगे. If I am working on the projection on vertical plane पे कोई भी projection आता है तो उसे A dash बोला जाएगा, और साइड व्यू में अगर उसका प्रोजेक्शन ऑब्जर्व करता है तो इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड ए डबल डैश. वैसे ही अगर कोई लाइन ए बी है उसका प्रोजेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लिया जाता है तो उसे बोला जाता है टॉप व्यू, और नोटेशन दिया जाता है स्मॉल अल्फाबेट ए बी के फॉर्म में. अगर कोई लाइन का प्रोजेक्शन हम वर्टिकल प्लेन पे देखते हैं तो उसे इंडिकेट किया जाता है ए डैश बी डैश से, और अगर उसे हम साइड व्यू में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है ए डबल डैश बी डबल डैश. And we have seen the criteria of presentation also. हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को कुछ ऐसे प्रेजेंट करते हैं, और उन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग रीजन है जहाँ पे ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस लाइन को बोलते हैं एक्स वाई रेफरेंस लाइन. 4 क्वाड्रेंट्स जनरेट होंगे एच पी वी पी के इंटरसेक्शन से, और कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ऑब्जर्वर को स्टैंड करवा के हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे प्रोजेक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे. And how do we work in this criteria? We had been observing the whole aspect from the third person standing at the arrow which had been mentioned in red. तो जहाँ पे red arrow है वहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे. इससे हमें वर्टिकल प्लेन जो है it is going to look like a line, and horizontal plane is also going to look like a line, और जो हमारा रेफरेंस लाइन बन रहा है इंटरसेक्शन से XY, that is going to be available at the point of intersection between HP and VP. You are able to see that whole. There are 4 quadrants developed when we observe from the red arrow region. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant, and we have seen how point is going to be projected in plane and how it is going to be represented on paper. ये हमने सीखा, ठीक है. So we have seen this, and I have also asked certain questions. वो questions क्या थे? अगर कोई point को indicate किया जाता है तो how we will be able to identify location of that point. Let me ask you one more. Let me ask you questions on this. तो पता चलेगा कि आप लोग clear हो कि नहीं, ठीक है. So let me move ahead with this particular zone right now. I hope you are able to see the zone. Okay, now let me ask you, this particular stuff available over here is presenting what? अगर आपको कुछ ऐसा sketch करके दे दिया जाए तो वो क्या है? कोई information दे सकता है इसके ऊपर? You can unmute yourself and say. सर इसका प्लान अबव रेफरेंस लाइन होगा और इसका एलिवेशन भी अबव रेफरेंस लाइन होगा. Good, good. चलिए, I am just. And the point is in second quadrant. Good. Second Point quadrant. is in second quadrant. Yes, or कोई behind VP and above HP. Good, good. It is behind VP and above HP. Means we are getting 3 different information: position of point, quadrant, and position of traces. Traces माने views. ओके, तो हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू जो है वो कहाँ मिल रहा है वो भी हमें पता चलेगा. ये कौन से क्वाड्रेंट का प्रेजेंटेशन है वो भी हमें पता चलेगा, और पॉइंट का पोजीशन क्या कह सकते हैं ये भी हमें पता चलेगा. इज इट क्लियर? लेट मी शिफ्ट इट इन अदर वे. हम लोग इसे दूसरे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं अभी. ओके, लेट मी क्लियर दिस वन. If anybody is ready to answer, then they can switch on their microphone.
Okay, let me ask. If point P is presented over here, in which quadrant it is? First quadrant. First First quadrant. quadrant. First First, quadrant. first quadrant. Great, great. First quadrant is right. Okay, where are we going to find the elevation and plan if the point is projected in first quadrant? Elevation is in front of Elevation is VP above and above Elevation reference. is HP. above the reference and plan And is below plan the is reference. is below the left. below. Below Below the reference line. reference. Good, good. Elevation is. मम्मी उभी है. Oh, oh, okay. Okay, I have to remove this recording now. Wait a minute. I'm just stopping the recording.